Center, Dr. Vikas Puri is here, and as we all know, कि वो President and Co-founder हैं of Intelligent Health Group, and which is he's an award-winning chiropractor and the chair of Caledon South Asian Association. So today उनका topic है arthritis, and over to you, Dr. Vikas. Well, thank you so much, Sobiya ji, and इतना अच्छा जा रहा था meditation. So I'm sorry अगर रोकना पड़ा किसी को. But I mean, I was late, so it's totally fine. No, that's totally fine. So nice. Okay, thank you, Swamiji, very much. So, सब मेरे screen देख सकते हैं अभी? जी. चलो. So nice to be with all of you again. It was a lovely session last time as well. लेकिन आपने ठीक बोला सोबिया जी, ये विषय जो है arthritis का, ये काफी लंबा चौड़ा है. And मुझे भी काफी दिक्कत हो रही थी कि कैसे इसको थोड़ा सा और concise बनाया जाए. But I'll talk in मैं मोटे में बोलूँगा actually, and we have the whole presentation. I can share it with everybody later. It's a whole I would say guide on how types of arthritis, how to manage it best, and so forth. But for now, I'll just give a general overview. Okay. So arthritis is सुना होगा सबने ना. यहाँ पर I think there's a raising hands icon here. Who here in the group has arthritis? इस group में किस-किसको arthritis? अच्छा हाँ, काफी लोगों को. Okay, makes sense. चलो शुरू करें. So let's start with going to the next slide. So the definition of arthritis क्या है actually? इसमें आज जो जोड़ होते हैं ना, उनमें सोज बढ़ जाती है. So arth Latin शब्द है, उसका मतलब ही यही है, joint. Arth means joint, और itis का मतलब होता है inflammation. So arthritis literally means joint inflammation. ये इसका मायने है. So ये हर एज में हो सकता है actually, लेकिन जो old age arthritis होती है, osteoarthritis, उसके बारे में बाद में बात करूँगा, वो एज के अनुसार होता है. जो दूसरे होते हैं inflammatory arthritis, वो कम उम्र में भी हो सकते हैं, even in teenage years. और obviously उसके काफी फिर नतीजे भी होते हैं कि people are in lots of pain medications फिर काफी हो जाते हैं. It's a stress on the government because of OHIP coverage. It's a stress on workplaces क्योंकि लोगों को कभी-कभी time off भी लेना पड़ता है, वो काम नहीं कर सकते. So there's lots of effects of arthritis as well. It definitely is one of the most common chronic health conditions in the whole world. ये दुनिया भर में होता है. It's not just Canada specific. It happens to every human being. And again, some arthritises are even in children. Right now, currently, according to World Health Organization, 350 million people have arthritis in the world. So that's a lot of people. Okay. So, दो तरह के arthritis होते हैं. Main umbrellas. One would be inflammatory arthritis. One is non-inflammatory. So inflammatory arthritis में ये होता है कि जो जोड़ होते हैं वो तो ठीक है, उसमें सोजन तो होती है, but around there in the tissues, जब सोजन ज़्यादा बढ़ जाती है, or you see more inflammation, you see greater size of the joints, that's inflammatory arthritis. That's more severe. इसको severe arthritis कहते हैं. इसमें ज़्यादा pain होती है. It can lead to more deformities as well. And examples you may have heard of is like rheumatoid arthritis, which happens in young people too, teenagers. You have juvenile arthritis too. Even 3 साल के बच्चे में भी हो सकती है juvenile rheumatoid arthritis. It's very, very painful. Ankylosing spondylitis happens from age 15 to 35 in boys mostly, but it's a very painful condition. They actually lose the whole spine. The spine can't move anymore. It becomes like one solid stick. There's no individual movement of the bones anymore, and that's permanent. ये जो भी है arthritis ये permanent होते हैं. इसका कोई हल नहीं होता. Okay. Psoriatic arthritis is another common one, and gout. ये चीजें आपने सुनी होंगी.
A non-inflammatory arthritis is more that aging arthritis, the one that happens with age over time. And osteoarthritis is the most common of that. Old age arthritis, it's called, or degenerative joint disease. These are common names for it. चलो इसमें थोड़ा सा और गौर किया जाए. हमेशा लोग मुझे पूछते हैं जब मेरे पेशेंट्स आते हैं कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है. तो जो obviously जो inflammatory arthritis हैं, they're autoimmune. Autoimmune का मतलब ही ये होता है कि तब कोई वजह नहीं होती. It's just the body starts to attack itself. It's an immune response. Okay, the body starts to attack its own joints and think it's an invader, and that causes the problem. Yes, there's definitely genetic factors to this. So, and everything is genetic, but arthritis for sure. If somebody in your family has had arthritis before, they're more likely you're going to get it as well. Okay, so there's definitely genetic factors to this. Let's look at now osteoarthritis, which is the most common. ज़्यादातर जिन्होंने भी हाथ उठाया था कि मुझे arthritis है, most likely you have osteoarthritis. Osteoarthritis is old age arthritis or degenerative arthritis. It happens over time. And this is a good description. You see in the x-rays here. इसमें क्या होता है कि जो cartilage होती है, जो चमड़ी सी होती है हड्डियों के विचकार, that cartilage is a spacer. It's a shock absorber. It's a cushion between the bones. So वो काम होने लगती है. Arthritis में यही होता है कि जो cartilage है वो काम होने लगती है, वो thin होने लगती है. तभी हमें पता लगता है कि ठीक है, this is arthritis. So when we look at an X-ray, ये knees की X-ray है, ये वाली, okay? घुटने जो होते हैं, और ये काफी common problem होती है. Obviously, as we age, के knees में pain होने लगती है, okay? Knees में clicking होने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आने लगती है वगैरह. इसकी यही वजह है कि ये जो space है ना, इन हड्डियों के बीच में, ये कम होने लगती है. ये cartilage है, ये thin होने लगती है. So bones almost touch each other. और जितना ज़्यादा touch करेंगे, उतनी ज़्यादा pain होगी. And जब ये बिल्कुल space कम हो जाए, या बिल्कुल खत्म ही हो जाए, तब replacement surgery बहुत ज़रूरत होती है. So knee replacement. Okay, this happens when you need, when that happens, you need knee replacement. So this is like an example of what an X-ray would look like for the knee. हाथों में ऐसे भी लगने लगता है कि थोड़ा सा shape खराब होने लगती है, deformities होने लगती हैं in the body. Again, the space between the bone, individual bones in the hand starts to go away. The cartilage spacer starts to go away. So you can imagine कि उसके साथ क्या होगा. उसके साथ तो यही होगा ना कि you start getting joint pain, stiffness, lack of flexibility, ठीक है? Some swelling as well. And again, we can see all this on an X-ray. X-rays is where we can diagnose the osteoarthritis. Okay, let's go now to what we can do. So इसका हल क्या है? तो मैंने कहा था कि इसका कुछ हो नहीं सकता, यानी कि we can't reverse the arthritis, ठीक है? But अच्छी बात ये है, the positive news is that we can slow down the progression of the arthritis, and we can maybe even stop it from progressing. Okay. और दूसरी बात ये है with osteoarthritis is that we can actually help the symptoms. काफी हद तक जितनी जो symptoms हैं आपकी, जो pain है, जो lack of movement है, जो range of motion में problems जो हैं, उनमें हम improvement दिला सकते हैं. We can definitely improve the movement, the strength of your muscles. We can try to slow down the progression of the arthritis. ठीक है? और इसमें होता है जैसे chiropractic treatment होती है जो हम करते हैं. हमारे पास machines होते हैं जिनके साथ ये जोड़ों में थोड़ी सी movement हम फिर से दिलाते हैं, which create better movement in the joints. And as long as the joint's moving, arthritis won't progress. जब stiffness आने लगती है और कोई treatment ना किया जाए, फिर और भी stiffness होने लगती है and more degeneration happens. So it becomes imperative, very, very important that anybody with arthritis should see a chiropractor once a week or once every 2 weeks for life. This is very, very important. जितना आप ये करोगे, ये maintain होगा, नहीं तो it'll only get worse with age.
it'll just continue. Physical therapy, physiotherapy. So हमारे पास physiotherapists भी हैं जो exercise की prescription देंगे आपको, जिससे all the muscles around the joints stay strong. So again, that will also slow down the stress on the joints, and then the progression will be less. काफी लोगों के पास दवाई भी होती है. I mean, we don't recommend medicines because में side effects भी होते हैं. You don't want to take the medicines for life. But yeah, sometimes you need to take it when there's too much pain. So then there will be like your Advil type of things, or Advil for arthritis, Tylenol for arthritis. उसमें थोड़ी सी anti-inflammatory effects होते हैं. So उससे पेन थोड़ी कम होने लगती है और सोजन भी थोड़ी कम होने लगती है. जब पेन काफी हद तक बढ़ जाए, कोई हल नहीं हो रहा, inflammation is very great, and you haven't done physiotherapy or chiropractic, some people then take the route of taking an injection. लोग हमें कहते हैं कि हमें टीका लगा था आर्थराइटिस की वजह से, उससे थोड़ी सी पेन कम हुई है, लेकिन कुछ महीने बाद पेन वापस आ गई. So पेन तो वापस आएगी, क्योंकि जो इंजेक्शन है, it's a temporary measure. It's going to reduce inflammation. It's a steroid, but you can't keep doing that. You don't want to do that more than 3 times, in a lifetime, because it weakens your bone. और बुढ़ापे में मैंने पिछली बार भी बोला था ना कि osteoporosis की प्रॉब्लम काफी है सीनियर्स में. Osteoporosis ये होता है जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और इस टीके से वो और भी कमजोर होने लगेंगी. So हम नहीं चाहते कि you're at even more risk for fractures. So इससे पहले कि आप injections लगाएं, please see a physiotherapist and chiropractor. Okay, it's very important. ठीक है. अगर इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, थेरेपीज के साथ नहीं, इंजेक्शंस के साथ नहीं, दवा के साथ नहीं, फिर surgery is the only option, and surgery should always be a last option. उसमें replacements होते हैं, but replacements are not always successful, and the healing time for replacements is long, sometimes several months, और कभी-कभी पूरी तरह से mobility वापस नहीं आती, especially depending on age. If you're older when you get it, then healing is very difficult. Okay. So what can we do to prevent? चाहे अब भी आपको arthritis हो या ना हो, you can prevent it from getting worse. You can slow it down. और कैसे? एक तो देखो, weight is really important. जितना ज्यादा weight होगा, उतना ज्यादा stress पड़ेगा जोड़ों पर, और उतना ज्यादा फिर arthritis बढ़ सकती है. It'll increase, it'll speed up. So we want to make sure that we manage our weight, keep our weight down. And problems ये भी बन जाते हैं ना कि अगर घुटने में arthritis है और हम कहते हैं exercise करो, लोग कहते हैं कि हम चल नहीं सकते, क्या exercise करेंगे, कैसे हम walk पर जाएंगे, कैसे हम cycling करेंगे, क्या कर सकते हैं हम. So ठीक है, swimming is really good. It's a non-weight bearing exercise. Okay, you can do that. आजकल hand के pedals भी होते हैं. Okay, to manage your weight. Obviously diet modification, diet पर जोर रखें फिर. Lots of water that you have to drink, right? More fresh vegetables, कुछ तलियां चीजें, जो sweets वगैरह वो कम कर लें. So diet modifications and other type of exercises that are non-weight bearing will also be helpful. So अब हम inflammatory arthritis की ओर जाते हैं. Specifically जो सबसे common वाली है, जो लोगों ने सुना हुआ है पहले, is rheumatoid arthritis. आप देख भी सकते हो, शायद आप किसी को जानते भी हो जो ऐसे दिखते हैं. देखो कितनी deformity हो गई है हाथों में. The fingers start to just go the wrong direction. They start to curl up. Or in जोड़ों में, in the knuckles, देखो कितनी सोजन है. Okay, this is a very painful condition. और जैसे मैंने पहले भी बताया, this can happen in young age as well. और इसका एक और भी होता है, it's called juvenile rheumatoid arthritis. जैसे मैंने बोला, it happen बच्चों में भी होता है. So इसमें क्या होता है कि from time to time, periodically, out of the blue, you get sharp shooting pains, redness in the joints, and difficulty with movement. And as you get older, this
continues to last for long periods of time with less and less times of relief. This is an autoimmune disease. The immune system attacks itself, and that's why you get these problems. Bad thing is with inflammatory arthritis is that the joint itself starts to erode. Uski shape खराब होने लगती है. हड्डियों की shape ही खराब होने लगती है. That creates more permanent damage too. इसमें ये भी होता है कभी-कभी कुछ लोगों को low grade fever भी रहता है because of the inflammation. So थोड़ा सा बुखार रहता है. Or generally they are very fatigued. Because when you're in pain, it takes out your energy. The other type of inflammatory arthritis is psoriatic arthritis. Psoriasis, shayad aapne suna hoga. Psoriasis is like eczema that you can get on the back of the elbow. Jaise ye wali diagram dikha rahi hai. This is psoriasis. Or on the knees, you can get psoriasis. Sometimes on your scalp. But that condition, when you have psoriatic arthritis, जिनके पास psoriasis है, पहले psoriasis होता है, जो skin condition होती है. उन लोगों में ये होता है कि as they get older, they have more likelihood of developing psoriatic arthritis. It's a risk. ठीक है? So अगर आप अपने बच्चों में भी कभी देखोगे, young लोगों में देखोगे कि उनको psoriasis है, उनको बचना चाहिए. They'll have to take more precaution to make sure it doesn't get to psoriatic arthritis because they're more likely to have it now. So what can you do? Again, diet modifications, keeping your weight down, making sure you're getting good exercise, coming to the chiropractor regularly, keeping your joints moving. This is all very, very important. So जैसे कि rheumatoid arthritis में था, इसमें भी है कि inflammation होता है जोड़ों में. You can get sharp pains, you can get redness in the joints and so forth. Okay. हाथों में भी होता है, पाँव में भी होता है, knees में, और कभी-कभी back में भी. जो rheumatoid arthritis थी वो आमतौर हाथों में होती है and the spine. अब gout. Okay, gout भी शायद आपने सुना होगा. Gout कुछ लोगों को होता है. It's very painful. I have a family member with gout as well. Out of the blue, you get redness in the joint and sharp pain. Okay, और ये क्यों होता है? ये आप देख रहे हो पीला. इसको uric acid crystals कहते हैं. Uric acid बनता है जोड़ों में, specifically वहाँ पर deposit होता है in the big toe and in the thumb. जब वहाँ पर होता है buildup of the uric acid, you to the point where there's enough deposits, then you get the swelling and inflammation. फिर उसके लिए दवा best रहती है. Colchicine, allopurinol, ये दो दवा हैं जिससे ये uric acid थोड़ा कम होने लगता है. And then you manage the condition. But it can keep popping up from time to time without warning. Just you have to make sure you have your medicine on hand. And chiropractically, physiotherapy-wise, we help to make sure all the joints in and around that area are moving properly so that they don't get painful from walking funny. So your uric acid क्यों बनता है? Uric acid accumulates usually because your body can't digest the acid properly. And uric acid बनता है दाल से, red meat, wines. So अगर आप ये चीजें खाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. Especially during the time of an episode, you'll have to make sure you're stopping those things altogether. ठीक है. Ankylosing spondylitis मैंने बोला था कि the spine itself gets fused. All the bones fuse together in the mid-spine, and you have a lot of lack of motion. This happens in boys and males age 15 to 35. And उनका posture अगर देखोगे, even their movement, उनके neck में कोई movement नहीं रहती.
maybe 10-15 degrees of movement. इतना ही move कर सकते हैं. They can turn their head. Even their hips, they're locked, they're fused, so they can't twist their hips. Their mid back is like it's solid. Okay, so that especially in the morning, they're very, very stiff. So उसमें यही है कि through chiropractic treatment, we can try to keep as much mobility as possible and keep them comfortable and prevent the pains. That's what we do for this condition. So all of these we can manage through, like I said, physiotherapy, chiropractic, medication, if and only when required. Okay, but otherwise, like I said, diet is very important, especially an anti-inflammatory diet. What is an anti-inflammatory diet? Fresh green vegetables, okay, is really good. Lots of water is really good. Lack of carbohydrates. So carbohydrates ko kam karo, sugar ko kam karo, have more fresh vegetables and fresh fruit. That's an anti-inflammatory diet. Okay, so if you're doing that, that will be very helpful. An anti-inflammatory diet is high in more of an alkaline quality. So agar sharir mein koi bhi acidity aa jaye, then inflammation will increase. But with an anti-inflammatory diet, you'll have less acidity, and your blood levels will be more what we call alkaline, which is more healthy, which will mean less inflammation. Okay, लोग हमें हमेशा कहते हैं कि ठीक है कोई supplements वगैरह तो नहीं है. Definitely, there are supplements for arthritis. When it's degenerative arthritis, osteoarthritis, glucosamine and chondroitin are very, very important. Okay. So glucosamine and chondroitin are the natural building blocks, the molecules of cartilage. Isse cartilage banne lagta hai. So you should definitely take that. And you can get anywhere, Costco, etc. Like I always say, you get what you pay for. So trying to get a good quality one from a health food store, Healthy Planet, for example, they're very good. Also, agar kabhi bhi aap Healthy Planet mein jaoge, hamara naam de dena, Intelligent Health Group, and so we have a discount with Intelligent Health Group. You get 10% off all your supplements. Okay, and so they have high quality glucosamine. Ek aur problem hoti hai ki glucosamine, the best source of glucosamine are actually from cartilage, like animal cartilage, like shark cartilage. So if you want a vegetarian version, you can get them. They're less common, but Healthy Planet does carry some option for vegetarian glucosamine. Okay. Otherwise, usually it's from shark cartilage or maybe from cow cartilage. That's most of the supplements in the market. Okay, exercises, so best exercises for osteoarthritis, for example, for the knees, like I mentioned, swimming, cycling. Agar cycle par nahi chad sakte aap, to you can get stationary pedals, even from Amazon. Ek kursi mein baith kar bhi aap pedal kar sakte ho. Usse achhi mobilization hoti hai ghutne ki. You can do yoga. Yoga would be excellent. Full body stretching. That would be very, very good for flexibility for arthritis. और अभी जो हमने session किया है स्वामी जी के साथ, that is fantastic. I can't say enough about it, that mindfulness meditation in general, to bring stress levels down, will help with managing any type of pain. जब आप meditation में जाते हो, ध्यान में जाते हो, you lose a little bit more consciousness of the body, and you're able to remove your consciousness from the pain. इससे क्या होता है, stress hormones कम होने लगते हैं body में, और जितने ज़्यादा stress कम होगा, inflammation कम होने लगेगी body में. So the physical manifestation, the physical effect of meditating is less inflammation in your body, less toxicity, less acidity. Okay, so meditation, I'm glad we did the session alongside today, because it's perfect. It's definitely a therapy for arthritis. बाकी assistive aids भी होते हैं. Assistive aids कौन से होते हैं? For example,
अगर back में arthritis है, low back में, आप एक orthopedic belt ले सकते हो. और हमारे clinics बेचते हैं ये चीजें. It's covered by insurance companies as well. They're proper orthopedic supports for your lower back, for neck, for elbows, knees वगैरह. Special or arthritis bracing होती है जिससे ज़्यादा support मिलती है जोड़ों को. उससे stress कम पड़ेगा जोड़ों पर, and you'll have less pain. It'll manage your pain very well. So the bracing is one big one. Another big one is a TENS machine. TENS machines होते हैं, शायद आपने देखे होंगे, Dr. Hose होते हैं. It's like Dr. Hose, but this is more stronger. चिपकियाँ होती हैं, आप चिपका लो और एक इलेक्ट्रिक करंट निकलती है लीड्स में, और उससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है और pain gets managed. It modulates your pain. That's a TENS machine. That's covered by your insurance companies too, in case you have insurance. And we sell them in our clinics as well. The other thing that we deal with in our clinics is custom orthotics. Orthotics are very important. Okay, हर एक इंसान को orthotics पहनने चाहिए. Orthotics क्या होता है? It's a special insert for your shoes to manage your posture, decrease stress on all your joints of your body. इससे arthritis कम होने लगेगी, and will slow down the progression because it'll balance your posture more. It'll make sure you're having less stress on all your joints, from your feet, knees, hips, all the way up. Okay, so the main conclusion then, when we're thinking about arthritis, is that it can be complicated. There are two main types: inflammatory ones, which are much more harder to control because they're autoimmune. The immune system is eating itself, and we have to manage it through a combination of medications, exercise, chiropractic, physiotherapy. And it can happen at any age. And the other one is old age arthritis or osteoarthritis. That we can prevent quite a lot. You don't have to have arthritis in old age. You don't have to. हमारे काफी patients हैं जो मैं खुद देख रहा हूँ. Over 20 years I've been treating them. I treat them every month. They come in for their regular maintenance visit with me, and they're in their 80s now, and their spines look like textbook normal. They look like perfect because they've been doing maintenance. जैसे पुरानी गाड़ियां भी देखते हो ना, कभी-कभी 1950s cars. Some people take so good care of them. They're showcased. They're in the car shows. They look better than my car, which is new. It's because what हमारी भी जो शरीर है, it's just a machine. Whatever you do for it, pays dividends, right? So you want to make sure you're taking care of your body. So regular maintenance care with a chiropractor is very important. So that's really important to know. बाकी ये है कि arthritis can take away your quality of life. So making sure you're managing it now. Don't let it run away on you. Don't. As you get older, it starts to quicken. The rate of degeneration starts to get very fast as you get older with every year. So managing it with regular chiropractic care, physiotherapy, exercise, all the things I mentioned, proper diet is essential. Don't let it run away. Otherwise, it will affect your quality of life. You'll have lack of movement, more pains, more disability. Okay. So Mohini ji thi last time on the call, right? I've talked to her in between as well. You see what happened to her quality of life, right? All of these arthritis can really, really affect people. Okay. All right. Now the good news before we go to our question and answer is that we will have at the end of this gifts again for everybody. Everybody enjoyed my gifts last time. So I thought we would increase the gifts to having three free giveaways for a completely free chiropractic or physiotherapy assessment in any of our clinics today. And of course, whoever's here on the call and anybody that's a member of the Women's Council, the offer still stands. You have a VIP discount of 10% off any of our services. Our services include chiropractic, physiotherapy, massage, acupuncture, osteopathy, naturopathy, dietitians, psychotherapy, you name it. So you get 10% off of any of those services lifetime. Okay. And for anybody that doesn't win the grand prize today, you can still take advantage of a complete assessment at least, and your first treatment in our office for any of the services for just $49. Normally it's over $200.
Okay, Joe, thank you so much. So I'll open it up for questions now. Yes. Narinder ji, Yes. Yeah, ठीक है बिल्कुल. And डॉक्टर साहब actually ये क्या हुआ? आवाज ठीक आ रही है? आवाज क्या फोटो भी बंद हो गई जैसे. आंटी आप हमें नजर आ रही हैं, आप व्यू पे जाके ना. बस आ गया. जी आ गया आपके पास में मेरे. जी जी आप आ रही हैं नजर. Actually मैं गिर गई थी. I had a fall और मेरे बैक में काफी चोट लगी. उसकी मसाज भी कराया, फिजियोथेरेपी के पास भी, और डॉक्टर ने मेरी बोन में इंजेक्शन भी लगाया. इंजेक्शन का तो मुझे एक दिन भी आराम आया. अभी मैं कहूँ एक दिन में या 10 दिन बाद मुझे आई नेवर फेल्ट गुड. तो वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ. और अब भी मैं 2 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती. पेन स्टार्टेड इन माय बैक. तो व्हाट शुड आई डू? ਤੁਸੀਂ ट्रीटमेंट्स कराई ने हाल तक? एक मिनट मैं इसको बड़ा कर लूँ. हाँ जी. हाँ जी, ਤੁਸੀਂ कोई ट्रीटमेंट कराई है हुन तक? फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक? मैं क्या ना फिजियोथेरेपी में जाती रही हैं. I had 7 sittings and I was feeling better. वो करंट भी लगाते थे, वो लगा के पैक्स ऐसे. हीलिंग और हीट भी, मसाज भी बहुत अच्छा. जितने दिन जाती रही ना उतने दिन तो मेरा ठीक रहा. बट अब मतलब कभी ठीक हो जाती हूँ दिन में, कभी जब 2 मिनट खड़ी होती हूँ तो बैक में पेन है. और इंजेक्शन भी लगा मेरे. अच्छा. उससे तो मुझे एक दिन भी नहीं फायदा होगा. या वो नहीं कराना चाहिए था आपको. You always try physiotherapy first and chiropractic first, then पहले मेरा इंजेक्शन लगा फिर मैं गई फिजियो के पास. हाँ, अदा नहीं करना चाहिए था. But that's okay. Don't worry. Doctor suggested me. I didn't go myself. No, I know. And the doctors are great, but they look from their perspective, and so that's their protocol, right? Their protocol will be medicine first. Makes sense. That's what they do. But I always say that if you can go natural, that's better. If you can avoid the injections and prevent the side effects, that's better, because it does make your bones weaker when you start taking those injections. So I would say कि पहली गल है कि जो तुसी ट्रीटमेंट शुरू कीतियां सीगियां उससे फेयर दी शुरू करो. 5 to 7 treatment is just a start. It's not enough. You need to continue going until you get more maximum therapeutic benefit. Maximum therapeutic benefit is where you've gotten rid of the pain as much as possible. You have maximized your strength and flexibility, and then you're just stabilizing it. You're just going to go for maintenance after that. Maintenance is once a month. It's a lower hip, lower back, hips, they are affected. Yeah. So the physiotherapy, chiropractic combination would be best for you. And you've already shown that it helps you. Sorry, I am taking this Tylenol whenever it's severe, otherwise nothing. I am doing exercise also. So तुसी छड्डिया क्यों? Therapy ने छड्डी क्यों सी? तुर के जानी हुंदा सी, सीवी लग गई. बस थोड़ी दूर है. बस जान तो हमारी बस छड्डिया. Otherwise she was very nice. बहुत अच्छी सी. उत्थे तुसी वापस जाओ please. And please start again, because it's important. जिद्दां मैं तुहानू हुणे दस्सिया ना कि नहीं तां जो arthritis हैगी है वो वधदी रहेगी. ते arthritis है या सट दे नाल है? तो देखो आ गल हैगी है क्योंकि थोड़े उम्र दे हिसाब नाल जब कोई भी सट लग गए arthritis बनेगी ते फिर उस तो बाद फिर वधेगी. So तदी ट्रीटमेंट्स बहुत जरूरी हुंदा कि पहले ही ट्रीटमेंट्स दे नाल एक रोक जी पै जाए ताकि arthritis बननी ना लगे. That becomes very important. Excuse me, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ arthritis ਜਾਂ ਗੋਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂਜੀ. Due to this uric acid. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਬਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਬਨੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. That also
you can say there's a very bad shape. But just because you have a bunion doesn't mean you have gout. Gout is a very specific condition where the joint gets very red and very painful because of uric acid. If you have a bunion but no redness, then usually that's arthritis, just plain osteoarthritis. There's no treatment for bunion, only नहीं है। surgery. नहीं, we have treatments. We have something called toe correctors. जितना braces नहीं लग दिया मुंह वास्ते, there's braces for the toes that help to straighten your toes out. So we can do that. And that is a rubber or plastic? I have one that. Exactly. Hanji, I plastic have rubber. that. Yeah. Okay, thank you very much, doctor. No Thank you. problem. But go back to your therapy for sure. Yeah. Thank you, Dr. Puri. Next is Prabha ji, then Tahayya, and I think then Kamaljeet ji. Okay, ji. Prabha ji, unmute yourself. नमस्कार जी, आप सबको भी नमस्ते। मैं थोड़ी देर से आई थी। हाँ जी, तो मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि मेरे को जैसे एनसेड है, एनसेड तो दर्द की गोली होती है, तो एनसेड मैं ले नहीं सकती हूँ। कोई भी तकलीफ हो तो एनसेड से मुझे एलर्जी है। ठीक है। कोई भी दर्द की गोली नहीं ले सकती हूँ। अगर मेरे को कोई तकलीफ होती है, तकलीफ तो होती है, लेडीज को सबको ही होती है, मैं क्या बताऊं, होगी, सारे को होती है, मेरे को भी है। मैं ज्यादातर जो क्रीम है, पेन किलर क्रीम्स है, वही अप्लाई करती हूँ, जो पेन किलर वो है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी मुझे बहुत थर्ड स्टेज का है, ऑस्टियोपोरोसिस भी ज्यादा है। एक जो मेरे को आपसे बात करनी थी वो ये कि 15 मार्च को मैं गिर गई थी सीढ़ियों से, 14-15 सीढ़ियों से फिसलती भी गई थी नीचे। तो जो मेरी बोन थी, टेल बोन, उसमें फ्रैक्चर आया था। उन्होंने कहा था कि भाई आपका 2 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसी समय मेरे हस्बैंड की भी आंखों की सर्जरी हुई थी, तो मैं रेस्ट तो कर नहीं सकती थी, रेस्ट करा भी नहीं जाता उसमें। मेरे पास काम का लोड भी काफी था और जो मेरा रेगुलर घूमना था वो बंद हो गया, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि पेन बहुत रहता था। तीसरा नुकसान कि बिना घूमना, बिना एक्सरसाइज करे, खाना तो हम खा ही रहे हैं, इसकी वजह से मेरा तब से लेके अब तक 7 किलो वजन बढ़ चुका है। 7 किलो वजन बढ़ चुका है और अब मेरे को पेन रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। अब मैंने स्टार्ट करना, घूमना शुरू कर दिया तकरीबन 1 महीने से। Good. लेकिन जो मैं जितना मैं घूमती थी उतना घूम तो लेती हूँ, लेकिन अब मुझे 3 जगह बैठना पड़ता है। पर मैंने अब शुरू कर दिया है। लेकिन ये वाली बात है कि जो वो तो ऑब्वियस है, मैं भी समझती हूँ कि मोटापा होना आसान होता है, उसका कम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है। उसकी वजह से चलने फिरने में भी दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है, साथ में फिर और सारी बैकबोन वगैरह ये सब परेशानी वाली बातें हैं। और बस मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि एनसेड जैसे सूट नहीं करता मेरे को, उसका कुछ और तरीका हो जिससे मैं उसको ले सकूं। तो आप एनसेड मत लो ना, आप थेरेपी के लिए आओ, ट्रीटमेंट के लिए आओ। तो आपको ये सख्त जरूरत है कि आप एक तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। आप पहले गए हो कायरोप्रैक्टर के पास? हाँ, मैं जाती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी वो मुझे टच नहीं कर रहे, कह रहे यू आर नॉट इन कंडीशन, तो मैं आपको टच नहीं करूंगा। पहले मैं जाती थी उनके पास, वो अभी टच नहीं कर रहे, कह रहे हैं आपकी बोन्स कमजोर हैं और तो प्रोसेस आपको है, मुझे डर लगता है। हाँ नहीं, सो अभी ना आप ऐसे कायरोप्रैक्टर के पास जाओ। अगर आप हमारे क्लिनिक्स में आओगे, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है ना, नॉन फोर्स टेक्निक्स हैं हमारे पास। अच्छा। जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत सेफ है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी सेफ हैं, for babies भी हैं safe। So हमारे पास machines होते हैं, very gentle electronic machines that do all the adjustments for very very weak bone। So वो best रहेगा आपके लिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एकदम से पेन एकदम कम होने लगेगी, like immediately you'll get immediate relief in your pain from the treatment। and हमारे पास laser treatment भी है अभी। laser में ये होता है कि it's a very strong light
that we shine into the cells, into the bones, and immediately usse sozen kam hone lagti hai. Inflammation comes down right away, and pain comes down right away. So this is the non-medical management of pain of arthritis. And we always want to start with non-medical management. अगर उस ट्रीटमेंट के साथ पेन रिलीफ मिले ना जिस हद तक आप चाहते हो और अभी भी हद से ज्यादा पेन है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी आप एनसाइड लो, तभी आप मेडिकेशन लो, नहीं तो मत लो. मेरा पेन का ये हिसाब है कि आई हैव अ गुड कंट्रोल ऑन माई सेल्फ. बहुत ज्यादा अच्छा खासा पेन में टॉलरेट कर लेती हूँ विदाउट टेकिंग मेडिसिन. और जो चलना है वो मेरा पेन की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं. और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती हूँ, थक जाती हूँ जल्दी से. अभी भी मेरे को 1 महीने का ये लगा हुआ है हार्ट का लगा रखा है. तो और भी सारी प्रॉब्लम्स है, उसको लेते हुए जो रेगुलर मेरी चलना है वो कम हो चुका है. आई थिंक द वेट इज ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम नाउ. So you should come and see one of our naturopathic doctors. जो हमारे naturopaths है ना, वो एक diet plan बनाएंगे आपके लिए अच्छे सा with an anti-inflammatory diet, and they'll help you with the weight loss, okay? And they'll also tell you the non-medical pain remedies. कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन से herbs हैं, कौन से supplements हैं जिससे ये inflammation कम होगी. Curcumin के बारे में आप जानते हो, हल्दी जो होती है, right? हल्दी, हाँ. Comes in the proper pill form. Cat's claw, devil's claw, ये सब एक natural supplements होते हैं. नहीं, हल्दी समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया. हल्दी के अलावा कुछ समझ में नहीं आया, वैसे बता दीजिए. ये जो formulas होते हैं ना, ये health food stores में मिलते हैं. आप वहाँ पर जाओगे ना, उनसे पूछ लेना, देखो मुझे पेन होती है, पेन मैनेजमेंट के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए क्या अच्छा है, वो आपको बता देंगे. लेकिन 2 होते हैं, इसका नाम है, अजीब सा नाम है, it's called cat's claw. जैसे बिल्ली नहीं होती cat, cat's claw, जैसे उसका पंजा जो होता है. It's not made of that, but पता नहीं क्यों उसने वो it's actually a herb. It's called cat's claw क्योंकि मुझे लगता है उसका पंजे के जैसे लगता होगा वो जो plant है. So the एक तो cat's claw, another one's devil's claw, जो शैतान होता है, उसका claw, उसका पंजा. So it sounds like witchcraft, but it's not witchcraft. It's just plants. They're herbal remedies. So कहीं भी आप जाओ and get the herbal recommendations from the store. मेरे को दूसरे का डॉक्टर पुरी, प्रभा जी 1 मिनट में जरा यहाँ एक बात करना चाहूंगी. डॉक्टर पुरी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप बड़े आराम से बैठ के सबका जवाब देते हैं, सब कुछ करते हैं. एक चीज जहन में रखिएगा कि यहाँ हम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पे भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ टिप्स पे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा. और आप में से किसी ने बुक करानी है, आई थिंक हम में से बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, क्योंकि कईयों के पास इंश्योरेंस नहीं है, कई नहीं कर सकते. तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने जो ऑफर की है वो दोबारा भी रिपीट कीजिएगा. लास्ट टाइम आप आए थे, आपने बहुत अच्छी ऑफर की थी और अब फिर कर रहे हैं. तो प्लीज इनके साथ 1-on-1 भी बुक कराइए, जैसे ये कह रहे हैं पूरा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना बहुत सी चीजों का. आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी कायरो, फिजियो. पिछले प्रोग्राम में ये आए तो तब मुझे पता चला कि फिजियो और कायरो होता क्या है. मैं तो एक से ही समझती थी कि भाई वो कुछ करते हैं, क्या करते हैं वो नहीं पता. वो कोई मसल्स के साथ करते हैं, कुछ हड्डियों के साथ करते हैं, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था. सो आई एम सो ग्रेटफुल. तो जी प्रभा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे सॉरी उस्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. सो हम ऐसा करेंगे, देखो जिनको भी एक कंसल्टेशन की जरूरत है ना, 1-on-1 कंसल्टेशन, वो हम बिल्कुल फ्री में देते हैं. सो हमारे क्लिनिक में आओ, फ्री कंसल्टेशंस होगा, या मुझे फोन भी कर सकते. लास्ट टाइम भी मैंने अपना सेल फोन दिया था, 2 लोगों ने मुझे फोन भी किया था. We did a personal consultation. I'm happy to do it. Happy to answer the questions anytime. फिर से मैं अपना सेल फोन दे दूंगा चैट में. You can always call me. We can always talk about it. But yes, everything is individual. Individual plans होंगे, individual customized treatment plan भी होगा, and I'll give you individualized, customized recommendations. But आप सही कह रहे हो उस्मा जी, just for sake of time, we'll try and streamline to the general tips and tricks and techniques. बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी. मैंने अपने बेटे से बात कर ली है, वो मेरे को लेकर आएगा. एक्चुअली me and my husband and me,
वी आर नॉट मोबाइल एक्चुअली, तो मेरे को अपने बेटे की हेल्प लेनी ही पड़ती है। बिल्कुल आऊंगी मैं उनके साथ ही। मैं ये कह रही थी, एक तो हल्दी थी, एक कैट्स क्लॉ था, एक दूसरा क्या बोला था आपने तीसरा? तो अभी डेविल्स मैं ना हाँ एग्जैक्टली स्पेलिंग स्पेलिंग चाहिए उसके। जो शैतान नहीं होता, नहीं, स्पेलिंग दे दीजिए शैतान के। शैतान के स्पेलिंग्स। ओके अभी मैं करता हूँ। सो चैट में मैंने डाल दिया डेविल्स क्लॉ और एक है कैट्स क्लॉ, अच्छा, ठीक है। डेविल्स क्लो, अच्छा, और कैट्स क्लो, ओके। एंड ये curcumin, ये हेल्दी ये चीजें, आम हाँ। होते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए। और ठीक है, ग्लूकोसामीन is for osteoarthritis. ये हम्म, बहुत जरूरी है, ये सबसे बेस्ट है। This is the most obviously researched and known definite solution for arthritis is glucosamine. एक दो सबसे Manages जरूरी एक बात कहना चाहती हूँ लास्ट में, जो जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं और हम लोगों को समझते हैं, सुनने के बाद हमारी बात भी सुन के समझ के समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। It's a pleasure. Thank you so much. थैंक यू प्रभा जी। तहैया आपका डिजिटल हैंड थक गया होगा, कंवल जी ने तो हाथ नीचे कर लिया, तो नाउ तहैया। Hello, Dr. Puri. Thank you so much for a wonderful presentation, first of all, and thank you so much for your kind offer for everyone. मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी इसी महीने डायग्नोज किया है एर्थराइटिस, पर मेरे जो दोनों हाथ हैं, उसमें जो दोनों थंब हैं, उनके जो दोनों जॉइंट्स हैं, उनमें मुझे पेन है और कंटिन्यूस पेन है। और साथ में मेरे लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, उसमें उसके जो ज्वाइंट है उसमें मुझे पेन है। तो डॉक्टर ने एज यू सेड कि इसका कोई इलाज नहीं है, और दूसरे ये कि अगर है तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इट्स टू अर्ली फॉर मी कि मैं इंजेक्शंस लगाकर उसको क्योर कर सकूं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके हिसाब से ये वाली जो मेरी स्टेज है एर्थराइटिस की, वो कौन सी स्टेज है और मैं इसको कैसे क्योर कर सकती हूँ? तो आप definitely आना, जैसे उसमें जी ने कहा, this requires a personalized discussion, but also need to see your reports देखकर, x-rays देखकर फिर मैं बता सकता हूँ कौन सी स्टेज है। एग्जैक्ट स्टेज मैं बता दूंगा, ये भी बता दूंगा कि इसके रिस्क क्या हैं going forward, like what rate it's going to be progressing and what can be done to stop that. I'll tell you everything, और इसकी ट्रीटमेंट बेस्ट क्या है ये भी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज मैंने डाली अभी चैट बॉक्स में, paraffin wax bath. You need to start the paraffin wax bath right away. आपको शायद बताया भी होगा उन्होंने। अगर आप फिजियो के पास भी जाओगे with the arthritis of the hands, this is what they would do. But you can just buy it from Amazon, paraffin wax bath, और आप ये करें। इसमें ये होता है कि आप हाथ डालोगे in the wax, in the hot wax, you take it out. When it gets cool, you peel it off. तो उससे आप देखोगे कि काफी पेन कम होने लगेगी, mobility will increase and so forth. It just heats up the digits very nicely. डॉक्टर, लेकिन मुझे इसमें कोई स्टिफनेस नहीं है, मुझे कोई यहाँ स्वेलिंग नहीं है, बस सिर्फ जॉइंट में पेन है, तो क्या ये भी अर्थराइटिस में ही आता है? Exactly. So जैसे मैंने बताया ना कि दो तरह के arthritis होते हैं। एक तो inflammatory arthritis होता है, इसमें काफी swelling होती है, redness होती है, deformity भी होने लगती है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे आप बोल रहे हो ना कि बस पेन ही है और कुछ नहीं है, स्टिफनेस नहीं है नहीं, जोड़ों में। ओके, नहीं। अगर Like, आप मूव करके दिखाओ। ये देखें, पेन है मूव करने में, लेकिन स्टिफनेस नहीं है। आपने ब्लड टेस्ट कराया था? अभी तो नहीं करवाया उन्होंने मेरा इस सिलसिले में, बस उन्होंने सिर्फ देखकर ही मुझे बोल दिया कि अर्थराइटिस है। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी कैसे कैसे डायग्नोज किया है। आइदर तो इसको ऐसे अभी कर मैं कह सकते हैं। सकता हूँ कि आपको अर्थराइटिस नहीं है। ओके, जैसे आपने मूव किया ना, that's not in the line of arthritis. So मुझे अब शक हो गया है। तो I would actually, पहले तो ये बात है, अगर आप कभी भी हमारे क्लिनिक्स में आओगे, we would never say arthritis without doing x-rays or blood tests. So blood tests में अगर inflammatory arthritis है, उसमें markers आ जाते हैं, rheumatoid factor arthritis, जो markers होते हैं ना, वो blood test में ही आ जाते हैं कि आपको rheumatoid arthritis है, ankylosing spondylitis है, क्या है। जो osteoarthritis है वो x-ray में दिखाई देता है। okay. So one way or the other, you can definitively diagnose between x-ray and blood test. Okay. And if it's in neither of them, then it's not arthritis.
मुझे लगता है कि this is more repetitive strain. और वो तो हम एकदम से ठीक कर सकते हैं in a few treatments. Okay. And is there any जैसे मैंने किसी से सुना था कि अगर हम विटामिन डी के इंजेक्शंस लेना शुरू कर दें तो ये जो बॉडी पेन है या जॉइंट पेन है इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. Is that okay? Yeah, but not injections. Don't do vitamin D injections. Take vitamin D 5,000 IUs of a strong brand like a Steroil brand or Genestra. These are the best brands. That would be the best for you. 5,000 IUs. It keeps inflammation down and it helps with pain. It helps with strengthening the bone. So can you write it down please for me? And thank you so much. Yeah. Thank you so much. Okay, next. कमलजीत जी नेक्स्ट है और उसके बाद सोबिया फिर आप हैं. थैंक यू एवरीवन. काफी क्वेश्चंस का तो जवाब मिल गया है, लेकिन मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से कि फर्स्ट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द गाउट एंड द बुनियन जो पैर पे हो जाता है? पैर की शक्ल दिखाई थी तो कई लोग इसको कहते हैं कि गाउट हो गया, कई लोग कहते हैं कि बुनियन ग्रोथ है. तो इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि what type of problem we are having? Second, if it is due to the यूरिक एसिड ज्यादा हो गया या इसका बैलेंस नहीं है, तो यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट टाइप ऑफ स्पेसिफिक डाइट वुड यू रिकमेंड? आमतौर पे हम कह देते हैं कि डाइट ठीक करो. उस ठीक का क्या मतलब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ डाइट वी शुड अवॉइड एंड व्हाट टाइप ऑफ डाइट वी शुड ऐड इनटू आवर रेगुलर? थैंक यू. अच्छे सवाल उठाए हैं for sure. Okay, so शुरू करते हैं. पहले जो बनियन होता है, बनियन काफी आम प्रॉब्लम होती है. Most people sometimes even from birth उनमें से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ापन आ जाता है in that big toe. But over time, especially ladies में, क्योंकि जो high heels वो पहनते हैं, जैसे जूते वो पहनते हैं, वो वजह होती है कि आस्ते आस्ते वो deformity बनने लगती है, because the front foot gets squeezed, toes get squeezed by the high heels, and you get the abnormal shape of the bone. So that's the main cause of bunions. Bunions का ये मतलब होता है कि instead of the toe looking straight, ये थोड़ा सा टेढ़ा लगने लगता है. You start getting more that V shape. When that bone starts to get enlarged and so forth, and you get more and more deformity as you age, it's usually osteoarthritis. It's more old age arthritis, okay? It's not gout, okay? So it's just a degeneration, deformity over time because of what I just mentioned. So gout hota hai, wo blood test mein nikal aata hai. If you think you have gout, you would know it because it would be severe pain. जो आम bunions होते हैं उसमें pain नहीं होती. Most people with bunions are painless. There's no pain from the bunion. अगर आप ज़्यादा जोर लगाओगे उस जोर पर, maybe they'll feel some local tenderness or some discomfort when you do that, but that's it. लेकिन जिनको gout है, वो severe pain है. वो तो move भी नहीं कर सकते उस toe को. आप हाथ थोड़ा सा भी लगाओगे उन पर and it'll be very hot. That joint will be hot. It'll be very painful, very sharp pain. एक चीज़ सी उठती है वहाँ पर. And so it's not comfortable. Or agar wo shak aa jaye, then go to the doctor. He'll do a blood test and he'll just confirm if you have gout or not. Ek bar diagnosis aa gaya gout ka, then you'll have it for life. In other words, ye aata jata rahega. You'll have sporadic episodes. Ab dawa khaoge, colchicine and allopurinol, ye do dawa hain. Within 7 days, the pain will be gone and you'll be in remission again. Or it could be, months or years before your next episode happens. Lekin ye aata jata hai. But that's okay. It can be managed with the medication. Ab diet ki or chale. Diet mein ye hota hai ki, especially if you're prone to getting frequent episodes, then you do need to stop wine, alcohol jo hoti hai, and you need to stop red meat. Red meat and wines are the most common reason for uric acid buildup in the body. Next, jo hamari dal vagara bhi hai, okay? They have purines, which cause uric acid. So that would be next on the list, okay? But first you take care of the first two,
Agar aap vegetarian ho and you're still getting frequent episodes, take away the dal and see how that is. But especially while you're having an episode, then you definitely want to be doing those, getting rid of those things altogether during the episode so that you get out of it quickly. Ji. There was a question in the chat for bone marrow. So I never said bone marrow is good for you. I just said that glucosamine is good for you when you have osteoarthritis. Osteoarthritis में ये होता है कि जो cartilage होती है ना between the joints, it wears away. That's osteoarthritis. That's old age arthritis. Old age arthritis is when the joints start to decay with the cartilage getting weak. For that, you need glucosamine. And glucosamine is found mostly in not bone marrow, but in cartilage, like beef cartilage and shark cartilage. But glucosamine is not good for gout. Gout mein koi to matlab hi nahi hota uska. Because gout is not a getting rid of the cartilage. Gout is just an inflammation of the joint because the uric acid crystals usme jam jate hain joron mein. So that's a totally different condition. So hopefully that answers that question. And the other question before was from Virendraji. So Prolia injections are being taken for osteoarthritis. So Prolia is actually not for osteoarthritis. Prolia is for osteoporosis. And yes, it is taken every 6 months, and that's fine. That's a hormone replacement. Yes, next question, किसका है? जी डॉक्टर विकास, मेरा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर विकास, आपने बोला ऑर्थोटिक्स का. सो आई गॉट एन ऑर्थोटिक मेड अ लॉन्ग टाइम अगो for my foot. They said there was a discrepancy between the two legs. That's what they said a long time ago, because I have a bunion as well. I have Pallis valgus and I have knee issues as well. So I got a orthotic made a long time ago. But जब वो मैं पहनती थी तो मुझे बहुत discomfort होता था. Is that normal with an orthotic that it takes a lot of time to adjust, or is there something wrong with that orthotic and I might need to get it rechecked? So there's two things that can happen with first of all, if you have a bunion, अच्छा हुआ आपने इसकी बात की है ऑर्थोटिक्स की, कि जो बनियंस होते हैं ना, इसको मैनेज करने के लिए ऑर्थोटिक्स बहुत जरूरी है. ऑर्थोटिक्स में हम एक कट आउट कर सकते हैं जिससे कम स्ट्रेस पड़ेगा ऑन दैट जॉइंट, और उससे ये ग्रोथ कम होगी, बनियन की ग्रोथ कम होगी, and will also take pressure off that area, so there'll be less pain from in that area too. So getting a proper designed orthotic to support the bunion is very important in managing bunion. Ab rahi baat orthotics ki. So orthotics are changing your posture. It's changing your gait. It's changing the way you move. So zahir hai ke pehle shuruaat mein koi mushkil aa sakti hai. Get used to it. It might take time. कुछ लोग immediately adjust हो जाते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, right? But you will adjust to it. मुझे 6 हफ्ते लगे थे to get used to my orthotics, and that's because I had some significant plantar fasciitis issues. So it can take that long. लेकिन आम जो होता, in my experience, on average, people get used to it within 1 to 2 weeks. But if you're still having problems week to week, if it's not getting better, अगर आपकी comfort नहीं बढ़ रही week to week, then there's a problem with the orthotic. You have to go back to the person that made it, designed it, and they have to get it redone, or they have to make the proper modifications. Kabhi hota hai, I would say maybe 5% of the cases where we have to send the orthotic back and just get minor modifications made, and then that solves the issue. But it should never happen that you should never be getting used to your orthotic. Everybody gets used to their orthotic, and when you do, then you love the orthotic. You can't live without it. Thank you so much, Dr. Vikas. No worries. जी शाजिया. Hello, can you hear me? Can you hear me? I can hear you. Okay, hi. I have 2 questions. One is like I have flat feet. Is this has something to do with arthritis or is it? So flat feet is very common. After age 35, we lose the shape of our arches. Our muscles get weak,
and with weight, our arches start to flatten. उससे ये होता है कि stress बढ़ने लगता है जोड़ों पर, on your knee specifically. So one of the main reasons for knee arthritis and ultimately knee replacement surgery is flat feet. For most people don't know they have flat feet because even a little bit of flat-footedness goes undetected. You don't know. But when we check you in the office, then you say, oh yeah, parts of our left and right mein. Arches a little bit lower. Then you understand, Katika, over the years, by walking like that for many years, 10 years, 20 years, Zairata, of course, you're going to get arthritis, more stress on your joints. So flat feet, it doesn't mean arthritis, but flat feet can lead to arthritis. Flat feet can lead to arthritis in your knees for sure. Definitely then after that into your hips and lower back. So orthotics are mandatory to make sure that if you have flat feet, you put the orthotics in. They'll take stress off all your joints. They'll bring the arches back, and you'll prevent arthritis from progressing or even developing in the first place. And another thing, you mentioned something, I didn't get it well to put, like my son, he works on computers, and I don't know, he got in his wrist, he has a problem in his fingers, like he does too much workout. I don't know what he did. So he's saying he got arthritis in his hands. So what can he do to, it's making him very depressed, like he's telling me, and he feels like he's getting all too early. Like why he's getting all this at this young age. और बताना फिर उसकी उम्र क्या है? He's 28. और ये पेन कैसे शुरू हुई थी? He goes to gym, he works out, he lifts weights, and then he was working with some renovation guy. And now, sometimes he says his fingers, they cannot hold anything. He just drops something like that. तो ठीक है, सो ये arthritis नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि from wear and tear and stress over time, this can become arthritis in the next 10 years, 20 years वगैरह. So अभी से इसका ख्याल रखें. We never should deny ourselves of being conscious of our pains or acknowledging our pains. We should take action, and we should make sure that we're managing the issue now. Otherwise, they become chronic problems later. So इसमें ये है कि मुझे लगता है उसको ये chronic strain पड़ रहा है हाथों में, and the joints are getting inflamed. So we need to साथ हमें एक तो treatment करनी पड़ेगी, बाकी we'll show him proper ergonomics and proper ways of doing things at work, so he doesn't aggravate himself in the first place. So definitely we can take care of it. ये बुढ़ापा नहीं है, उसको बता देना, but just say that it's just from stress from the job, yeah. And we can manage it. Thank you. Also मेरे ख्याल में ये भी आया कि पहले हम बात कर रहे थे ना flat feet. I also want to mention that if people have had flat feet for some time, you can get plantar fasciitis. ये काफी common problem होती है. इसमें ये होता है कि the muscle under the foot gets strained, फिर inflame होने लगता है, and then it gets very painful. Especially in the morning when you get out of bed, it's like a sharp pain at the bottom of your feet. अगर उसका ख्याल ना किया जाए, if you don't get treatment, that flat-footedness then can cause what we call a bone spur. ये हड्डी बनने लगती है. More calcium deposit happens at the where the muscle attaches on the heel bone, and you get a heel spur, and that's very painful. ऐसा लगता है जैसे आप कील पर ना खड़े हो रहे हो. It's very very. I always wear joggers. I don't wear any shoes. Excuse me, I had this heel bone enlarged, and it was cut by the injection. अच्छा, okay. मेरी थी, it काफी लंबी हो गई थी नीचे को ना heel पर. हाँ, बहुत painful होता है. हमारे पास एक treatment है उसके लिए, shock wave उसको कहते हैं. उससे वो we can break it up and we can remove it, but it's painful. Even the treatment's painful. उन्होंने इतना बड़ा इंजेक्शन ना ये मेरे एंकल में लगा के तो उससे ऐसे घुमा के काटी है. That's also a more invasive way of doing it. Yeah. Can you please tell me about, because I had lack of vitamin D last winter. You were telling some brand or something.
Yeah, the best brand for is, I just put in the chat, Genestra. Genestra is the #1 brand in for vitamin D. There's a ranking done by across Canada, and that's ranked #1. I'm not getting anything in chat. The last one you wrote is curcumin and the other thing. After that, I'm not getting. Oh, sorry, I'm sending direct messages. Because I sent somebody a direct message. Yeah. By the way, the person I sent Okay. a direct message to, I hope they respond to me because I want an answer to my question. But let me fix this now. Yeah, you and put make it this in the for chat. और everybody. कमला जी कब से वेट कर रही है ना कमला जी? हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हेलो। डॉक्टर पुरी के साथ ना हमें एक इन पर्सन सेशन, कुछ ऐसा कोई इवेंट रखते हैं, इनको बुलाते हैं जहां आप सब लोग इनसे पूछ सकें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही बात है, बहुत मुझे भी अच्छा कुछ बता ऐसा रहे हैं। रखते हैं। आप जी, in person कब शुरू कर रहे हो? we will do it. कुछ इवेंट रख लेंगे ना ऐसा जिसमें आपको बुलाएंगे, वरना ये तो हमारे जूम पे ही सेशंस होते हैं। जी कमला जी। हाँ जी, डॉक्टर Because साहब Uzma ji, बहुत we would अच्छा love बता to do रहे a हैं। medical camp. We would love to do a medical camp where we would come and give free consultations and service right there on the spot for your people. Sure. हाँ जी, डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो मेरी प्रॉब्लम कुछ है। ऑस्टियोपोरोसिस है मेरे को, टांगों में भी दर्द रहती है और सर्वाइकल का भी है पेन, बैक पेन भी है, और ये हड्डियों में उंगलियां भी थोड़ा थोड़ा दर्द करती हैं। जैसे मेरे को पूछना तो ये है मेन कि मैं चल तो लेती हूँ, चलते वक्त मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, बाद में थक जाना तो और बात होती है, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो फिर मेरे से खड़े नहीं हुआ जाता। 5 मिनट भी खड़े हुए नहीं, 5 मिनट से भी कम तो खड़े हुए नहीं, तो बस टांगे जो हैं बस बड़ी प्रॉब्लम है। आधा घंटा तो खड़े हो लिया कभी तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका हल क्या किया जाए? खड़े होना भी जरूरी होता है हर काम के लिए। और पेन कहाँ पर होती है उस समय? वो बैक में होती है या घुटने में? नीचे की लोअर लेग्स, लोअर लेग्स में होती है ना पेन? बस फिर वो ऐसे ऐसे पेन होती है या कमजोरी होती है या दोनों? नहीं, पेन होती है, खड़ा नहीं हो जाता। उसको पैर को हिलाती जाती हूँ कि जरा खड़ी हुई हूँ तो खड़ा हो सकूं, कि ऊपर नीचे करती जाती हूँ, खड़े नहीं हुआ जाता। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। हाँ, so ये काफी ऑब्वियसली आम प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप खड़े होते हो ना ग्रेविटी के साथ ये जोड़ और भी पिचक जाते हैं। ये जो जोर्स है ना, जोड़ होते हैं ना, जो जॉइंट्स होते हैं, उनकी स्पेस और भी कम हो जाती है विद ग्रेविटी, तो फिर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है उस समय, और फिर तकलीफ होने लगती है, और आपको बैठना पड़ेगा, सब कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये भी है, मैं आपको दिखा दूं, ये एक स्पाइन है। ओके, तो स्पाइन में ऐसा होता है कि जब आर्थराइटिस होती है ना, जैसे मैंने बताया था कि इस वर्टेब्रस के बीच में ये कार्टिलेज होती है, तो ये थिन होने लगती है। सो जब आप खड़े हो गए ना, तो ये जो वर्टेब्रस हैं ये और भी पास आ जाएंगे, और ये जो नाड़े हैं, ये जो नर्व्स हैं, इन पर फिर दबाव पड़ने लगता है, और फिर ये अगर नर्व्स पर दबाव पड़े तो फिर वीकनेस होने लगती है इन द मसल्स, क्योंकि जो मसल्स हैं, ये नर्व फ्लो जो होती है, जो इंफॉर्मेशन जाती है फ्रॉम द नर्व टू द मसल, वो रिड्यूस होती है ना ऑब्वियसली अगर इस पर दबाव पड़े, तो फिर मसल्स में कमजोरी आने लगती है, एंड देन यू इमीडिएटली फील लाइक यू हैव टू सिट डाउन। इसलिए मैंने बोला था कि कमजोरी तो नहीं होती, सो कमजोरी भी होती है, कमजोरी भी होती है, फिर कमजोरी और पेन भी होती है, दोनों चीजें होती, तो उसे कमजोरी तो होती है। वो भी कभी कभी कैल्शियम विटामिन डी तो लेते रहते हैं। बाकी और क्या करना चाहिए? फिर खड़े होना थोड़ा तो हो सके ना, कम से कम आधा घंटा खड़ा हो जाए कोई काम करने। जैसे उस्मा जी ने बताया था, बस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, ये सप्लीमेंट्स, ग्लूकोसामिन ये जरूरी है, वेट लॉस, ये सब चीजें हैं। यू हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, उससे अब मैनेज हो सकता है। अगर आप कभी मेरे पास आओगे या मुझे फोन करोगे, मैंने फोन डाला था चैट में, then I can talk about personalized plan for you.
एक्सरसाइज वैसे करती है ना, थोड़ा फर्क लगता है, कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, बहुत फर्क पड़ता है, हाँ, योगा हाँ, स्पेशली, लगता योगा है, जितना भी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करोगे ना, हाँ, उससे फिर लगता है कि उसमें थोड़ी जान है, तो नहीं तो बिल्कुल ही बैठ के अगर उठते हैं तो फिर ज्यादा ही महसूस होता है। डेफिनेटली। और मैंने मशीन के बारे में बोला था ना, असिस्टिव डिवाइस, टेंस मशीन, हर एक जिसको भी आर्थराइटिस है, यू शुड हैव अ टेंस मशीन ऑन हैंड, उससे पेन कम होती है एंड मोबिलिटी भी ज्यादा होने लगती है विद दैट मशीन। क्या चीज है वो? वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हमारे ऑफिस से भी मिलती है कमला टेंस जी, मशीन। हाँ जी, कमला जी, वो आप फिजियोथेरेपिस्ट की गई हैं कभी? नहीं, जिसको हमारी जुबान में वो कहते हैं कि ऐसे वो पैचेस लगा के ना करंट अच्छा, गुजरता है उसमें से, अच्छा, अच्छा, तो वो टेंस मशीन होती है। आजकल तो बच्चों ने रखी हुई है अपने पास। अच्छा, अच्छा, ठीक, जी हाँ। उससे फिर वो फर्क पड़ता है। ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। Also, मैं एक यहाँ पे add, I just want to add over here, or just want to ask you, आप जो ये सारा कुछ explain कर रहे हो ना, you are explaining that distance between the two bones, चाहे वो nerves कहीं भी वो रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो घुटने की हड्डी है, तो distance between two वो डिस्क जो है वो कम हो जाता है। कई बार ये भी तो प्रॉब्लम होती है कि वो तो किरच किरच करने लगती है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो डिस्टेंस बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर गैप बढ़ता है, दैट्स नॉट आर्थराइटिस। या पता नहीं क्यों, एक्चुअली काफी हम भी कभी कभी अम्यूज होते हैं यहाँ पर, कि स्पेशली जब हम इंडिया जाते हैं, जब मेरी क्लिनिक थी इंडिया में गुड़गांव में, तो जब भी मैं वहां पर जाकर बैठता था, लोग हमेशा आकर कहते थे कि मेरा गैप बढ़ गया है। हाँ। तो मैं कहता था गैप बढ़ नहीं सकता, गैप कम होता है, बढ़ता नहीं है। सो अगर गैप बढ़ता है उसको डिसलोकेशन कहते हैं, वो तो दैट्स एन इंजरी। if you separate the bones apart, that's a dislocation, that's a trauma. Yeah. That's not arthritis. Like arthritis, pata nahi kya say, it's more of like a common way of talking, but that's not a correct way of describing. So proper description yahi hai कि जो the space जो है वो कम होती है, that's arthritis. Gap बढ़ता नहीं. If अगर कभी भी किसी का gap बढ़ जाए, that's a dislocation. वो एक आप पैर की बात कर रहे थे कि पैर में कुशन रखा जाता है, तो आई विल लाइक टू आई शो यू दिस थिंग। तो ये दो है, एक लेफ्ट और राइट का। तो इसको जब पैर, सौभी अभी पूछ रही थी, तो जब पैर में रख के और जब वॉकिंग पे जाते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होता है, तो कहते हैं कि छोड़ो ये नहीं पहनेंगे। क्या ये जरूर, जब बनियन ग्रोथ है, प्रॉब्लम यू आर फेसिंग विद दैट प्रॉब्लम, तो ये पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है, and you have to be getting used to it. अगर if you're not getting used to it, इसमें इसका मतलब कि कोई problem है orthotic में, so उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए. Go back to the lab and they'll fix it, but you have to use it. उससे बनियन का जो growth है ना वो कम होने लगेगा. It'll slow down. डॉक्टर पुरी, मेरा एक क्वेश्चन है, बल्कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आई वुड लाइक टू शेयर। मैंने जिन लोगों को बहुत वॉक करते हुए देखा अपनी जिंदगी में, हमेशा वॉक की और बहुत अच्छी स्पीड पे उन्होंने की, उन सबको नी की प्रॉब्लम हो गई है एट अ लेटर स्टेज, लाइक इन देयर लेट, बल्कि एक तो मेरी भी वो लेट 50s में है फ्रेंड, उसको भी हो गई। मेरी मदर बहुत अच्छा चलती थी, उनके भी हो गई। एक तरफ हम ये सुनते हैं कि चलने से ये सब ठीक रहते हैं, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं ये सब, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को मैंने देखा है कि इत्तेफाक से मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी रही है, हो सकता है ये डिफरेंट हो, लेकिन मुझे लगा कि आप ज्यादा चलो, ज्यादा ऐसी एक्सरसाइजेस भी करो तो पाँव और ये घुटने खराब हो जाते हैं। Is it true? It's true. It's true because of this. Because especially back home, हम चप्पल वगैरह में रहते हैं. There's no support in that. Okay. Okay. So first of all, shoes. Okay. So I'm going to tell you my whole philosophy on this. Evolutionary wise, we were made to walk on grass. We're not made to walk on hard surfaces. Okay. पहली बात ये है.
Ab dekho, now we're walking on concrete, we're walking on hard surfaces, right? So there's more stress on all our joints. So jitna zyada aap chaloge sarak par or in mall, shopping malls वगैरह, zyada stress padega जोड़ों par, right? और ये बात है कि most people don't wear orthotics. उनको पता भी नहीं है कि orthotics क्या चीज होती है. Some people think it's for a specific reason you have to wear it. लेकिन जैसे मैंने बोला, after age 30, your cartilage weakens, your ligaments don't grow anymore, they don't regrow. So you start flattening your arches. Or after age 30, we also start gaining some weight sometimes, etc. So you start losing the arches. Once the arches get lost, then every step you take, you're adding more trauma into your knees. So jitna zyada aap chaloge after age 30 without putting proper orthotics to compensate, you're going to get wear and tear of the joint. So it almost becomes like inevitable that one day you will have arthritis of your knees. It happens almost in everybody. And then eventually at some age, people might need replacement or surgery. But you can do things preventatively. You can do chiropractic, you can do, again, weight management, you can do orthotics. This will all slow things down. But there's also genetic composition too. You have to factor that part in too. So these are the reasons. मेरे ख्याल में ऐसे ही हुआ है कि वो लोग ज़्यादा चले हैं, लेकिन उनके पास support नहीं थी ठीक तरह की, and it was just a matter of time before they. Makes sense. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा. और हम लोग तो देखिए ना, जो हम खवातीन हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम हाई हील पे चलें. तो हम लोगों ने अपनी, जब हमारी बैक एक नहीं थी तो हम में से मेजॉरिटी हाई हील पे चलता था. इसीलिए तो वो जगह लिख के लगा दिया ना कि 2.5 हील से ज्यादा ऊंची हील पहन के नहीं आप इस रेस्टोरेंट में आए या इस ऑफिस में आए, क्योंकि उन्हें पता है वी टेंड टू. फिर हम लोग जो सैंडल्स पहनते हैं या स्लीपर्स पहनते हैं समर में स्पेशली, बिल्कुल फ्लैट होते हैं. मैंने सारी उम्र वो पहने हैं, बिल्कुल फ्लैट वाले, और दे आर नॉट गुड फॉर अस. उसमें कोई कुशन नहीं होता, कुछ नहीं होता. तो कहीं ना कहीं वो बॉडी फिर कहती है कि अच्छा बच्चू, अब मैं तुम्हें पूछती हूँ तुमने मेरा ख्याल नहीं ना किया, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करती. तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हो जाती हैं. बट आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर. आप हमें बता रहे हैं कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट. No, definitely not. हम लोगों को अवेयरनेस आ गई है. अब ये हमारे हाथ में है कि हमने उसका चार्ज कैसे लेना है, उसका कितना ख्याल रखना है, क्या करना है. जहां तक हम लोग घर में कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, बट वी नीड प्रोफेशनल हेल्प एज वेल. उसके बगैर डायरेक्शन नहीं होती सही. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर पुरी वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर द ऑफर्स फॉर मॉल्टन विमेन काउंसिल. हम लोग सारे जो हैं बिल्कुल कोशिश करेंगे आपसे पूरा फायदा उठाएं जो आप डील ऑफर कर रही हैं सबको. और हमारे मुत्ता जी ने हमें अब ज्वाइन किया है. वो टाइम जोन का फर्क है, तो उन्हें लगा कि अब हमने ज्वाइन करना है, अब हमारा गुड बाय टाटा का टाइम है. सो मुत्ता जी जरूर प्रोग्राम देखिएगा. ये रिकॉर्डेड भी होगा, हमारा रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेंगे, और ये लाइव भी जा रहा था. ठीक है जी. Thank you so much, everyone. So, Asma ji, should we begin our draw? Oh yes, please. Okay. So, आज का जो है grand prize is for 3 giveaways for a complete free assessment, report of findings, and your first treatment. Okay. For either physiotherapy, chiropractic, osteopathy, naturopathy, जो भी आप चाहें, any service, it'll be only $49. Normally, that is for everybody. So everybody can take advantage of that. Like in the 3 people that win the draw, it'll be free. Okay, so it won't be no $49, it'll be totally free. But the other people, you can all take advantage of it afterwards. You'll still be a winner because you're still saving money. Chalo. So ऐसा हम करते हैं कि between the numbers of 0 and 20, I'm going to think of a number. Okay, so आपने chat box में लिखना है your number. You have to pick a number between 0 and 20. You can only pick one. And whoever 3 people are closest to that number will win the prize for a completely free assessment report and मेरे को लिखना नहीं आता. मैं आपको बोल दूं? Okay. मैं 19 बोल रही हूँ. 19. ठीक है. 19. 3 4
सबने डाल दिया अपना अपना नंबर? 3. किसने डाला? अब आप बोलो मत, इसमें डाल दो चैट बॉक्स में। अगर आप डाल नहीं सकते मुझे बता दो, then I'll put it in. ये हमें पता नहीं है इनिफ्लेक्स 0 कौन है। अगर आप अपना नाम भी बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने तो 4 बोला है ना, 4 नंबर। या इनफिनिक्स कोई है। Okay, ठीक है, सबने डाल दिया? Okay, so we have some winners. Okay, so मेरा number जो था, it was number 3. So Kamalji Wow. Kaurji, you got it exactly. So you're one of the winners. After that, the closest was, let's see, 4, किसी ने नहीं बोला ना, and nobody said 2. Next winner is Surjit Kaurji at number 5. Oh, wow, thank you. सुरजीत जी ये दोनों फ्रेंड्स हैं बड़ी पक्की। सभी फ्रेंड्स हैं। सभी आप भी तो फ्रेंड हो। जी हाँ। And Uzma ji, you've won. Yeah, I have one, but Shazia is saying she has 5 as well. She wrote 5 as well. And so she wins too. Yeah. So we'll have to have 4 winners. Wow. Wow. So generous of you. No worries. So you guys all win a free, completely free, worth $200. अब हमें क्या करना होगा? ये भी Come बता to your दो। clinics, let them know that you've won the free assessment and treatment. And just book in. That's it. So आपका जो नंबर आपने यहाँ चैट में डाला है वो इस नंबर पे कॉल करें कि क्लिनिक वाले पे करें? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, आप नोट कर लो। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ है? मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो एक तो है ब्रैम्पटन में, इसका फोन नंबर मैं अभी चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। वैसे आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो to see a location near you. This is valid at any location. So मैंने अभी ब्रैम्पटन वाला लिखा है, okay? So अगर आप ब्रैम्पटन में है, विलियम्स पार्कवे और हाईवे 10 के पास, then you would call this number. Okay? Dr. Vikas, this is in offers की कोई expiry तो नहीं है? नहीं, लेकिन जल्द से जल्द आप करो, क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे then nobody's going to remember. मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। नंबर नहीं दिखाई दे रहा। I didn't see the number actually. I did not see the number. Me too. हाँ, मुझे भी दिखाई नहीं दिया। ये अभी तक प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं। There you अच्छा go. अच्छा। Okay okay. ठीक है, ये extension 2 है। So हमारा मेन लाइन है 647-499-1444। ये सब आप नोट कर लो, 647-499-1444, that's main line। और तब आपको पूछा जाएगा कि आप कोई भी extension डाल करो। 1 is for downtown Brampton. Number 2 is Brickyard. Brickyard is the one that that I would host this offer in for Brampton, would be the Brickyard location. Mill Street mein mat jayega, that's the downtown Brampton one. They won't be able to honor it, but extension 2, the Brickyard location, Williams Parkway, Highway 10 in Brampton will honor it. Mississauga is extension 5, agar Mississauga mein hai. Or Callaghan mein in Bolton, we're extension number 3. So you'll hear the prompts and you'll just be able to press the button. डॉक्टर साहब इसमें अपने क्लिनिक का नाम एक दफा लिख दें ताकि किसी ने गूगल करना हो। So Intelligent Health Group, and you can go to intelligenthealthgroup.ca. ये नाम सबको इसलिए याद रहेगा कि सभी यहाँ इंटेलिजेंट लोग हैं। Exactly. नहीं तो उस्मा जी से बात कर लेना, and then she'll share the contact information. And I gave my cell phone number. I'll give it again. You can always contact me directly, and then I can always arrange it for you as well. Thank you so much. That's my cell number there. 41635. Intelligent
healthgroup.ca. 416358 ठीक है पाकिस्तान से भी लोगों ने ग्रुप ये आज वाला जूम सेशन ज्वाइन किया हुआ है और विनीपेग से भी. Oh, fantastic. Yeah. Excellent. Well, I'm so happy always that we are able to share this knowledge. Next month, मुझे लगता है हमारे दूसरे जो हैं osteopathic doctor, he will come and he'll also talk about nutrition, and that will be very good. He's amazing. He's so knowledgeable. He's a medical doctor, naturopath, osteopath, and a massage therapist. He's everything. So he's Zabardast ji. Thank you so much. okay. No worries. Okay ji. We'll be in Thank you so touch. much. Okay, ji. Bye bye. Goodbye everyone. Bye bye. Bye. Bye bye.